Good afternoon, dear student and concerned teachers present in the class. This is Shankar Sahu from Government High School, Sargipali. Welcoming to everyone this live class from Virtual Studio, District Education Office, Sundargarh. Dear student, in our last class we have discussed the part 1 of a very interesting story, that is a tiger in the house. So today I am with part 2 of that particular lesson. So without wasting our time, let's proceed towards the smart board and let's begin our learning. So the student, in our last class we have discussed that how that tiger cub Timothy, it was discovered by our grandfather, it means writer's grandfather, and Ruskin Byrne, how he particularly represented the story in a very interesting way. We have already acquainted with the story. So let's proceed the part 2 of this particular story. Dear student, the part 2 of this particular story start from grandmother. As already grandfather brought that tiger cub Timothy. So the tiger cub Timothy, it was got its name from grandmother. It means grandmother of our writer given the name Timothy to that tiger cub. So at first the tiger cub, who was named Timothy by grandmother, was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook Mahmoud. Dear student, first of all, that particular tiger cub was provided with milk. प्रथमे ताकू मिल्क दिया जाउथला खाइबा पई. Okay, next देखिबा. So here the important words brought up, already you know brought up is a phrasal verb that means taking care of. So brought up means palana kariba. Okay, and here initially milk, it is provided to that tiger cub. So his feeding, it was entirely done with the help of milk. But dear student, that milk, it was proved too rich for him. But the milk proved too rich for him, and he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil, to be followed later by a tempting diet of pigeons and rabbit. Dear student, here he got a delicious food in the later part. Initially he was provided with milk, but in the later part, whenever it was proved that the milk is proved too rich for him, माने ताकू बदहजमी हो जाउथला, ताकू हजम हो नथिला, तो तार खाद्य रे किछि गोटे परिवर्तन करा गला. तो कोन ताकू दिया गला? रॉ मीट दिया गला. रॉ मीट यू नो कंचा मांस ताकू दिया गला. ओके, एवं कोन दिया गला? कॉड लिवर ऑयल दिया गला. एटा मन रखिबो, क्वेश्चन मे बी आस्क्ड टू यू. एवं ता परवर्ती समय रे मध्ये ताकू दिया गला a tempting diet of pigeons and rabbit. ताकू pigeons एवं rabbit मध्य particularly जो स्वादिष्ट खाद्य ताकू दिया गला. And tiger cub here brought off in a very word we can say that beautiful way. बहुत सुंदर भाव रे ताकू लालन पालन करा जाउथला राइटर्स करो ग्रैंडफादर एवं ग्रैंडमदर को द्वारा. Okay, so you can able to find in this particular picture also, he was provided with raw mutton and cod liver oil. Later in the part, the temptest diet of pigeons and rabbit, it is provided to the tiger cub. Okay, so I think it is very clear. Diet means you know khadya. Okay, so put on a diet means was given simple food. Okay, एठी टिके एक जस्ट हमें पॉइंट आउट करिवा ए वर्ड टाकू तमे इग्नोर. यार मीनिंग टा होची बदहजमी हे गेला. और ए जो पुट ऑन ए डाइट मींस सिंपल खाद्य ताकू दिया गेला. पुट ऑन ए सिंपल डाइट. ओके, was given a simple diet. Next time jiba, next slide ku. Timothy was provided with two companions. ताकू दीटी साथी दिया गेला खेलिबा पई. दीटा साथी ताकू दिया गेला. तो playmates, here companion means playmates. गोटे थिला टोटो जार ना एटा की the monkey. The monkey thila, who was bold enough to pull the young tiger by the tail and then climb up the curtain if Timothy lost his temper. Dear student, ये जो monkey टी थिला बहुत दुष्ट थिला एवं बहुत साहसी थिला. तो टाइगर को मध्य कोन करि पको थिला? He was bold enough. Bold माने हला साहसी, enough to pull the young tiger. टाइगर को टाणी पकोथिला. कहा द्वारा टाणी पकोथिला? तार टेल को धरिकी. यू कैन एबल टू फाइंड इन द पिक्चर से केमती तार लांजू को धरिकी टाणी पकोची.
So ଯେତେବେଳେ ଲାଞ୍ଜକୁ ସେ ଟାଣି ପକଉଥିଲା tiger ଟି ରାଗି ଯାଉଥିଲା ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଉଥିଲା. So here the particular word lost his temper refers to become suddenly angry. ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଉଥିଲା. ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଉଥିଲା ସେ ମାଙ୍କଡଟି ପୁଣି କଣ କରୁଥିଲା ହଠାତ୍ ଉପରକୁ କୋଉଠୁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା. He was just climbing up the curtain. ପାଖରେ ଥିବା curtain ଯୋଉଟା ଯୋଉ window ରେ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଉପରକୁ ସେ ଚଢି ଯାଉଥିଲା. You can able to find in the picture also. Okay, so in this way both the companion they play with each other in this particular manner. It is so interesting, no? Yes. Okay, so here companion means playmates, bold means courageous, and lost his temper means anger. So lost his anger means suddenly ragi jautila. Okay, I think it is clear. Next time is next slide ku. And a small mongrel. ଆଉ ଗୋଟେ ସାଥୀ ଥିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେଟା ଥିଲା small mongrel puppy. Dear student, mongrel puppy refers to a certain kind of dog we can say जोटा कि शंकर प्रजातिर हम कहि परिबा different two kinds of dog कर particular breeding फलरे माने जो new pattern of new kind of गोटे dog ର जन्म होइते ताको हम कहि परिबा mongrel जोटा कि mixed kind of dog we can say like Shankar प्रजातिर a dog of mixed breed. Okay, a dog of mixed breed. So a small mongrel puppy found on the road by grandfather. Question may be asked to you. Grandfather को से a small puppy टा mongrel puppy टा कोठु मिलिथिला ना रास्ता कोडरु मिलिथिला. Okay, and at first Timothy appeared to be quite afraid of puppy. प्रथमे से डरुथिला काहाकू puppy को डरुथिला कि हम tiger. Here tiger छुआटी डरुथिला puppy को. It is so strange here because he was not realize his strength. ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଥିଲା ତାର strength ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା से पॉपी को डरुला. You can able to see in that particular picture केमती से डरुची पछ घुंचा दउची. ओके, एट फर्स्ट टिमोथी appeared to be quite माने शांत स्वभाव रा थिला. प्रथमे टिमोथी से छोटो पॉपी को मध्ये डरुथिला and darted back with a spring if it came too near. एवं से पछ को डेई पडुथिला पछ को डिया मारी पळौथिला जेतेबेले से पॉपी टी तार पाख को पळे आस्तला को डर थिला. पॉपी टी बोधे ताको कामुडी दबो ना कोन दबो एंती से डरुथिला. Okay, so in this way you can able to find here the very important two words. One is a mongrel, another word is darted back. Darted back माने कौन? Drew back. से पछकू घुंची जाउथला हटी जाउथला. आउट वर्ड हला with a spring. It is spring कौन? Spring माने डेइबा. Spring रो features कौन से डेइ थाए. तो spring भलिया से पछकू डेइ पडुथला जेते बेले पॉपी टी नियर को पळे आस्तला. Okay, so nice. They are playing in a very interesting way. Finally, he allowed the puppy to crawl on his back and rest there. तापरे समाने फ्रेंडली हे गले डियर स्टूडेंट. प्रथमे तो पॉपी को से डरुथिला परे समाने फ्रेंड हे गले. तो फाइनली कोन हला एठी हमरो टिमोथी अलाउ कला काहा को पॉपी को टू क्राउल ऑन हिज बैक. क्राउल माने कोन ना टू वर्क ऑन द चेस्ट माने ता चेस्ट बा पिठी ऊपर आसी की माने सोईबा बा सेठी चालीबा सेठी मतलब किसी खेल खेलिबा. ओके, एंड रेस्ट देयर एवं सेठी आसी की बसी पडुथला किए पॉपी टी. यू कैन एबल टू सी इन दैट पर्टिकुलर पिक्चर हाउ दैट पॉपी crawl on his back and rest there. So I think it is clear. One of Timothy's favorite amusement. Timothy रो गोटे बहुत मजादार फेवरेट जोटा थिला ताकू बहुत पसंद लागुथला amusement. Amusement माने कौन? माने जोटा की entertainment कौन ताकू मजा लागुथला बहुत. Was to stalk anyone. Stalk anyone माने कौन? जहाँ को माने देखी देला जहाँ सहित मिसी गला ताकू लुची छपी की जाय की देखिबा. Stalk anyone who should play with him, and so when I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorite. This student एठी हमरो राइटर रस्किन बर्न पळे आसली कोठी को ग्रैंडफादर को घर को. ओके, एवं आसीबा परे परे से बनी गले गोटे बढ़िया फ्रेंड काहर टाइगर टिमोथी रो. तो प्रथमे टाइगर टिमोथी तो डरुथला से जो एनिमल्स मानन को जो टोटो जो मंकी थिला एवं जो पॉपी थिला किंतु परवर्ती समय समानक सहित मध्ये से फ्रेंड से ये थिला. पुणी परवर्ती समय रे टिमोथी रो गोटे फेवरेट अम्यूजमेंट बा एंटरटेनमेंट कोन बाहरला ना से स्टॉक एनीवन हु शुड प्ले विथ हिम. जहां सहित से खेलुथला ताको कोन करथला स्टॉक करथला माने कोन फॉलो सीक्रेटली लुची छपी अनुसरण करथला. ओके, माने लुची गासी की हां कर दबो लाइक दिस
तुम डर था कबाट कौन लुचि था ये सडन पड़े आसला तुम्हें चिल्ले दी था इन दैट पर्टिकुलर वे ओके सो दैट इज हिज अम्यूजमेंट तो जड़े डरी जरा ना सो सी जो डरी जा अन्य जनकर रिएक्शन को बहुत एंटरटेनमेंट मिलूला ओके यू माइट हैव आल्सो एंटरटेनिंग लाइक दिस तुम मैंने एमती करूथबो तुम फ्रेंड मान सहित सो व्हेन आई केम टू लिव विथ ग्रांडफादर आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट तो टाइगर फेवरेट ये बनीगले देखा केमती फ्रेंडली सहित बनीगला ये रस्किन बॉन्ड केमती फ्रेंडली बनीगले क्या सहित टाइगर टिमोथी सहित विथ अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आईज डियर स्टूडेंट शाइनिंग आईज इठी हम टाइगर टिमोथी रो शाइनिंग आईज ता केमिति थिला ना धूर्त चाहाणी थिला clever look देउथिला से and his body crouching he would creep closer and closer to me suddenly making a dash for my feet rolling over on his back and kicking with delight and pretending to bite my ankle dear student एठी देखो केते इंटरेस्टिंग माने गेम खेलला भलिया टाइगर टिमोथी का सहित खेलुथिला रस्किन बॉन्ड सहित से कोन करथिला with a crafty looking in his glittering eyes तारो आखी जो चमकीदार थिला जो चमकीदार आखी थिला सेथु जणा पड़थिला क्लेवर चाहाणी हुशियार चाहाणी धूर्त चाहाणी एवं से पाखे आसुथिला क्रचिंग करथिला माने कोन क्रचिंग रो अर्थ हला बेंड द नीज एंड ब्रिंगिंग द अपर बॉडी फॉरवर्ड एंड डाउन इट मींस आंठू भांगी की एठी गुटे स्पेलिंग हमें टिके रीराइट करबा एठी हमें एठी आंठू जस्ट उकार लगेबा the bend the knees and bring the upper body forward and down it means आंठू भांगी जाकी होई बसिबा टाइगर पाखु को पळे आसला एवं आंठू भांगी की तांको सहित जाकी ही बसी पड़तला he would creep closer माने गुरुंडी क्लोजर पाखु को पळे आसला एवं बेले बेले कोन करतला सडनली मेकिंग ए dash for my feet एवं राइटर कर पाद को अटैक कला भलिया मेकिंग ए डैश मीन जस्ट लाइक अटैकिंग माने अटैक कला भलिया सेठी एक्टिंग करथला रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक एंड किकिंग विथ डिलाइट माने सेठी गुरुंडी पडुथला माने बढ़िया से खेलुथला किकिंग विथ डिलाइट खुशी रो सहित से किक करूथला लात मारुथला एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माय एंकल्स एवं मोर जो एंकल्स रे माने पादर एंकल्स रे से कोन करथला चाबला भलिया प्रिटेंडिंग करथला प्रिटेंडिंग माने छलना करबा बट डरेबा भलिया गोटे एक्टिंग करबा प्रिटेंडिंग okay here the word pretending means छलना करबा just like acting we can say okay just like acting okay dear students so these are the important words glittering means shining creep means slow moving धीरे धीरे चतुरतार सहित से आसुथिला एवं किभଳି भाबरे राइटर को सहित खेलुथिला एवं तांको सहित जाकी जुकी ही बसी पडुथिला बेले बेले पुनी अटैक कला भलिया एक्टिंग करूथिला प्रिटेंडिंग करूथिला कामुडी देबो भलिया oh my god you can able to find in the picture also okay so we will proceed to the next slide it is so interesting over here the student he was by this time the size of a full grown retriever dear student a particular word retriever generally it is a kind of dog we can say a large dog with thick black or light brown fur माने कला एवं धूसर रंगर फर थिबा हेयर थिबा लंबा बड़ माने डॉग सदृश से देखा गला नॉर्मली हमें डॉग गुड़ा को देखि थाउ ना बाघ टाउन रे हमें देखि थाउ की बाघ घर गुड़ा करे हमें देखि थाउ की सेही पे एठी डॉग सहित ताकू तुलना कराई छी माने से कि भलिया देखा होतला गोटे लंबा बड़ डॉग सदृश जहार बहुत फर थाए हेयर थाए कला एवं धूसर रंग सेमति देखा गला बटी छोट बाघ छुआटी भी बड़ हे he was by this time the size of a full grown retriever and when I took him out for work jete bele am writer tanku morning walk kareba pai sakale nouthile ba evening time re nouthile bahar ku people on the road would give us a wide berth loko mane dear student पढौथिले रास्ता साइड को पढौथिले काहे कि पढौथिले डरी कि obviously a tiger particularly here on the road so anyone can frighten over it तो केही भी डरी पारे तो समस्त रास्ता छाड़ी दउथिले एठी गोटे वर्ड अछि वाइड बर्थ मींस जागा छाड़ी दउथिले जागा दे दउथिले स्पेस दे दउथिले okay he was by this time the size of a full grown retriever and when I took him out for work
People on the road would give us a wide berth. समस्ते डरिकी तांको रास्ता छाड़ी दउथिले, जागा छाड़ी दउथिले. एठी ये पुणी बदमाशी गोटे करूथिला. कोन बदमाशी करूथिला? When he pull hard on his chain, I difficulty in keeping off with him. Dear student, एठी गोटे phrasal verb लागिची. गोटे chapter अछि in English grammar you are going to learn. Phrasal verb केमिति phrasal verb थाए सेति more than one word थाए जाको हमें multi verb बोली मध्य कहिथौ. दीटा तीनटा वर्ड थिबो से गोटे वर्ब हमको रिप्रेजेंट करथमा. गोटे चैप्टर पढिबा. एठी अछि कीप अप. कीप अप माने कोन? कंटिन्यू. कीप अप विथ माने कोन? कंटिन्यू करिबा. डियर स्टूडेंट जते बेले से चेन को टाणुथला माने झिंकी हि होथला, चेन रे बंधा थिला, हम राइटर तांको धरिथिले, तेतेले से चेन टी टाणी दउथला. आई हैड डिफिकल्टी. राइटर कहउजंती जे मते बहुत डिफिकल्ट लागुथला इन कीपिंग ऑफ विथ हिम. ताकू माने धरिबा, धरिकी चालिबा बहुत कष्टकर थिला. और छाड़ी देले कोन करबा? टेक कर दबो नि लोक मानकू. तो सेठी पई राइटर एठी कहउजंती बाप रे बहुत कष्टकर थिला से जो चेन टी की झिंकी दउथला, टाणी दउथला मते रास्ता रे. काकिना बहुत बड़शाली से ही जाइथिला, बहुत बड़ ही जाइथिला. दैट पर्टिकुलर स्मॉल Timothy become a grown up tiger right now. Okay, so dear student, I think this is clear. Retriever means a large dog with thick black and light brown fur. White bird means jaga tanku chhadi diya jautila. Keep up with means this is a phrasal verb. It means continue. Okay, so we will proceed to the next slide. His favorite place. Dear student, jete bele घर को से फेरुथला तार गोटे favorite place से चूज करथला. सेठी जाई से maximum time rest नउथला, बसुथला, आराम करथला. His favorite place in the house was the drawing room. Dear student, every house घर गुडाकर गोटे ड्राइंग रूम थाए जोटी कोन थाए? सोफा सेट पड़ी थाए. यस और नो? हमको हमर जो कुणुआ जी आसंती तांको हमें सेठी बसई थाओ. हमर जो गेस्ट आसंती सोफा सेट सेठी पड़ी थाए. So that is the drawing room. Okay, so dear student, ड्राइंग रूम तार गोटे फेवरेट रूम थिला. हम राइटर को घरे ताकू बहुत बढ़िया लागुथला. को रूम रे? ड्राइंग रूम रे. कोन पाई? सेठी सोफा सेट पड़ी थिला. कौन जो सफ्टी सोफा सेट आराम से जाके से बसी पड़ता. He would make himself comfortable on the long sofa. You can able to see in the picture also किभली भाबरे long sofa रे से कोन करिछि? सोई पड़छि. Reclining. जे स्टूडेंट reclining कहिले धीरे आसी कि बसिबा. बट एठी कोन? एठी सोइबा को हम बुझी परिबा माने से नई पड़ी कि सोई पडुथला. Reclining means sitting in a relaxed position, or we can say also just sleeping in a relaxed position also we can say. Reclining माने आराम रे बसी पड़िबा बा आराम रे टिके नई पड़ी कि सोई पड़िबा को हम reclining बोली कहू. Here you can able to find in the picture. बढ़िया से reclining से करूची. Reclining there with great dignity. Dignity माने पूरा माने बहुत बढ़िया है कि आराम रे डर भय किछि नाही. इहे ताकू किछि कहबार नाही. आराम से नई पड़ी कि टिके सेठी रेस्ट नहीं होतला. And snarling at anybody. Dear student, here this particular word snarling. एठी r टाको हमें साइलेंट करिबा. देखो snarling बोली पढ़िबा. Snarling at anybody to try to get him off. Another phrasal verb it is used here. Get off, dear student. तुमको कहा जाय थे get off. Get off माने कोन? निदरु उठिबा को हमें get off बोली कहि थाओ. ओके, तो जेते बेले से सोई थिला और जीए भी ताकू जाई की उठे पकौथला. who try to get him off. उठ उठ कहउथला. से स्नालिंग करथला. स्नालिंग माने कोन डियर स्टूडेंट? करजी उठुथला, बार्किंग करि पकौथला. ओके, इट मींस स्नालिंग. बार्किंग एंग्रीली. टाइगर गोटे केमती बार्किंग करथे? करिवो ना केमती गोटे करिवो साउंड काढिवो. ओके, so in this way whenever someone tried to get him off he was snarling at anybody whoever may be. ताकू काहाकू डर भय नथिला. ओके, सो से काहाकू भी स्नालिंग करि पकौथला जते बेले निद को केही भी भंग करथला जाई. जो समय से सोफा रे रिक्लाइनिंग करथला. रिक्लाइनिंग माने हला आराम से टिके सोई पड़थला. तार सेटा कंफर्टेबल जोन थिला. ओके, ओके डियर स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज क्लियर. नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट स्लाइड को. Timothy had clean habit. तार गोटे बहुत बढ़िया क्लीन हैबिट थिला. से सफा सुतरा स्वभाव रथिला. And would scrub his face with his paws. Paws माने कोन? पंजा. जेंति हमर हाथ तार पंजा थाए. ये स्टूडेंट पंजरे नख थाए. ओके, so Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat. एठी क्वेश्चन आसे कहा भलिया स्क्रब करथला तार फेस को
तार निजर पाउच रे तो तुम आंसर रे लिखिबो कैट भली ओके सो डियर स्टूडेंट्स कैट भलिया स्क्रब करथला स्क्रब करबा माने कोन रब करबा घसीबा से घसी के सफा कर देतला ता मुंह को कैट भलिया you can able to see in the picture in the previous picture you can able to see the last to scrape kon scrape karibo rubbing karibo you can able to find here just you can able to see साफ करूची माने घसुची ता मुह को एवं साफ करूची निदर उठले प्राय तो हमें मुह को साफ कर दो ना नहीं we are taking water and just washing our face but animals just scrubbing their face yes or no yes माने घसी थांती एवं सफा करथांती माने थोड़े पानी नेबे एवं सफा करिवे माने जस्ट घसी थांती okay so in this way Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat he slept at night in the cook's quarter dear student already we know ये टाइगर को ग्रैंडफादर को घरे जो कुक थिला ता नाम महमूद थिला तो से महमूद को क्वार्टर रे जाई कि से सोथला कोठी रात्रि रे and was always delighted एवं सकाळे से बहुत खुशी हो जाउतला at being let out by him in the morning जेते बेले ताकू सकाळो निया जाउतला मॉर्निंग वॉक पाई बहुत खुशी हो जाउतला कि टाइगर टिमोथी तो से काहा क्वार्टर रे सोथला कुक्स क्वार्टर रे कुक्स के थिला महमूद and always delighted means happy dear student तो एठी देखो मन रखि दियो delighted means to feel happy खुशी हेबा से खुशी हो पड़थला being let out जेते बेले बाहर को ताकू निया जाउतला at being taken outside बाहर को ताकू निया जाउतला जेते बेले मॉर्निंग टाइम रे बहुत खुशी हे पड़थला yes next जीवा next slide को one of these days ई दिनो गुडा करे यार हरकत देखी कि ग्रैंडफादर डिक्लेयर कले घोषणा कले माने सत्य जेमती ताकू किछि गोटे स्वप्ना ही जाई ग्रैंडफादर इन हर प्रॉफिटिक मैनर डियर स्टूडेंट तांकर जो सिक्स सेंस कथा कहउतला बोधे एवं से गोटे भविष्यवाणी कले प्रॉफिटिक मैनर मींस भविष्यवाणी करिबा भंगी रे से कहिले वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद बेड ओ माय गॉड से कहउचंती जे महमूद रो बेड रे हमें टिमोथी को पाइबा एंड नो साइन ऑफ कुक एवं से रोषाल बा से कुक रो हमें किछि चिन्ह वर्ण पाइबानी एक्सेप्ट हिज क्लॉथेस एंड शूज माने से कहउचंती जे हमें तार क्लॉथेस सिर्फ पाइबा शूज सिर्फ पाइबा एवं हमको देखियो को मिलिबोनी से कहाकू कुक को महमूद को या भविष्यवाणी कले किए ग्रैंडफादर काहे गले मे बी से किछि फाइंड आउट करथिबे एज यू नो एल्डर्स आर हैविंग सिक्स सेंस दे आर हैविंग द विजन दे कैन एबल टू सी द फ्यूचर इति पे हम बड़ लोकन को कथा मानिबा कथा देखिबा एठी कोन हेजी घटना तो से भविष्यवाणी कर देले प्रॉफिटिक मैनर मींस प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर प्रेडिक्ट करबा माने भविष्यवाणी करबा ओके डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जीवा ऑफ कोर्स निश्चित भाव रे इट नेवर कम टू दैट से भलिया तो किसी घटना घटिनी जो पर्टिकुलर भविष्यवाणी करथिले जेजे बापा हम राइटरंकर किंतु बट व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months ओल्ड किंतु जते बेले टिमोथी को 6 month हे गला डियर स्टूडेंट सही समय रे अ चेंज केम ओवर हिम सही समय रे किछि परिवर्तन तार आसिला he grew steadily less friendly आगरु फ्रेंडली थिला माने आसी घसी जाउतला नई पड़ी की सोई पडुतला देह रे घसी की रहि जाउतला किंतु यो फ्रेंडली रहिला नाही स्टेडीली माने ग्रेजुअली धीरे 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 से अनफ्रेंडली माने लोकन को सहित मिसला नाही जदि भी पाखे आसुथबो स्नालिंग करथबो माने राग रे गरजि उठुथबो दिस इज कॉल्ड एज अनफ्रेंडली बिहेवियर दिस स्टूडेंट को टाइगर तो व्हेन आउट फॉर ए वॉक जेते बेले ताको बाहर को निया जाउथला विथ मी माने राइटर कहउचंती जेते बेले मो सहित से बाहर को जाउथला he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet picanis ताको तमे फोनेटिक्स प्रोनाउंसिएशन हिसाब रे ई ताको कु पढी परले बेटर हबो पिकोनिस ओके पिकोनिस बट एज योर कंफर्टेबिलिटी यू कैन रीड पिकानिस और पिकोनिस बट यार फोनेटिक्स प्रोनाउंसिएशन पिकोनिस हमें पढ़िबा कथा ओके सो डियर स्टूडेंट जेते बेले से किछि कैट को देखि पकोथला जेते बेले किछि पिकोनिस को देखि पकोथला पिकोनिस माने कोन अ काइंड ऑफ डॉग जोटा कि स्मॉल लेग थिबो लॉन्ग हेयर थिबो फ्लैट फेस थिबो छोटो छोटो जो डॉग गुडा को बहुत हेयर थाए
एवं छोट छोट तांकर लेग थाए से भलिया कुकुरन को से पूरा जाईकी पछपटु गोड़े पकोथला सॉल्व करूथला स्टॉप करबा माने कोन करबा जाईकी पर्टिकुलरली छुपी छुपी पीछा करबा एवं डराई देबा हां कर देबा देखो यू कैन एबल टू सी इन द पिक्चर केंदी से कैट को डॉग को जाईकी गोड़े पकोची तांको केंदी डराउची तांको केंदी स्टॉप करूची छुपी 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 तांको पीछा करूची ओके सो डियर स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर स्लाइड ओके तो जते बेले ताको 6 मास हो गेला से टिके अनफ्रेंडली हे गेला एवं जते बेले बाहर को जाउथला से कैट को देखिले एवं पैकुनीज जोडा की सर्टेन काइंड्स ऑफ स्मॉल डॉग को देखिले से ताको स्टॉप करथला माने कोन करथला जाई की छुपी छुपी ताको अटैक कला सदृश्य ताको पीछा करथला सीक्रेटली माने एठी जेहले डरिबो ना नै यस नेक्स्ट sometimes at night we would hear frenzied cackling from the poultry house and in the morning there would be feeders lying all over the veranda अरे बाप एठी आ गुटे घटना पुनी घटुथला सेही समय जेतेबेले टाइगर टी बड़ हो जाइथिला maybe he was going inside the poultry farm in the night and killing the poultry or means chicken माने जो चिक्स गुडा थिले चिकन गुडा थिले तांको से किल करूथला बोधे एवं जेतेबेले सकाळ माने होउथला से समय रे कोन देखा को मिलथला बारंडा रे फीदर्स माने कोन डियर स्टूडेंट पर गुडा को पडिथला यू कैन एबल टू सी केमती पर गुडा को रक्तक्त जुडु जुडु ही पडिची समटाइम्स नाइट वी वुड हियर एठी राइटर हमर कहउचंती जे चिकन मानकर शब्द सुनुथला शब्द सुबुथला रात्रि रे हां केमती गोटे शब्द सुबुथला चिकन मानकर जेंते शब्द करंते समान नॉइज ऑफ द चिकन कमिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस माने कोन द सेट ऑफ द चिक्स जोठी कुकुडा मान रुहंती ओके तो सेठु शब्द आस्थुला एवं सकाळे देखा को मिलुथला से बारंडा रे पर ओके तो एठु हमें कोन जानु छी टाइगर टिमोथी रो as he was a wild animal dear student and understand what the things it was going on there next Timothy had to be chain off तापरे धीरे धीरे ताकू अत्यार आनिबा पई ताकू बांधिया को पड़ला Timothy had to be chain off ताकू बंधा गला more often प्रायतः बहुत समय रे ताकू बांधी के रखा गला okay you can able to see in the picture and finally when he began to stalk Mahmud जे की कुक थिला कहारो grandfather को घर about the house with what looked like villainous intent dear student villainous intent माने with evil motives गोटे मंद उद्देश्य रखी कि जते बेले से महमूद को माने सीक्रेटली पीछा कला स्टॉक माने कोन सीक्रेटली पीछा करी कि हां कर देवाटा डराइवाटा so this is reflect of very negative things over here तो हम grandfather को आउ निद हेलानी grandfather decide कले आउ याकू रखी होवनी it was time to transfer him to a zoo एबे समय आसी गला याकू गुटे जू को नेकी हमें ट्रांसफर कर देबा माने कोन ताकू स्थानांतरण कर देबा जू चिड़ियाखाना जोटी एनिमल्स मानकू केप्ट करी के रखा जाय थाय प्रिजर्व करी के रखा जाय थाय यू माइट हैव विजिटेड नंदनकानन जू दैट इज देयर इन भुवनेश्वर ओके द स्टूडेंट तो जस्ट लाइक दैट नंदनकानन जेंति गोटे जू अछि से भलिया पाखरे तांको पाखरे थिबा को गोटे जू को से पठे देबे बोली चिंता करली ग्रैंडफादर काहे कि देखिले तार हरकत दिन को दिन चेंज होबा को लागिची हिंसर होबा को लागिची वाइल्ड होबा को लागिची एवं से जिंसटा से केबे सीरियसली नै गेले जते बेले महमूद को सहित सेही पर्टिकुलर बिहेवियर से रिड्यूस कला यू कैन एबल टू सी इन द पिक्चर इभली भाबरे से महमूद को डराउची यू कैन एबल टू सी हाउ महमूद इज गेटिंग फ्राइटन ओवर हियर देखो महमूद केंति से पड़ी होची डरी की ई सिचुएशन जते बेले हला ग्रैंडफादर सीरियस हे गेले डियर स्टूडेंट्स से डिसाइड करले आउ याकू घरे रखी होबनी ओके नेक्स्ट स्लाइड द नियरेस्ट जू वाज एट लखनऊ पाखरे थिला लखनऊ जू जोटा कि 200 माइल्स अवे थिला 200 माइल्स जदि हमें किलोमीटर रे कन्वर्ट करबा सेही 221 31 समथिंग आसीबो ओके 221 किलोमीटर समथिंग आसीबो जोटा कि 200 माइल्स अवे थिला तांको घरठू ओके डियर स्टूडेंट तो एठी तुमको क्वेश्चन आसी पारे नियरेस्ट को जू को से माने नेले तापर केते माइल्स दूर थिला 200 माइल्स दूर थिला एवं लखनऊ जोटा कि नियरेस्ट जू को से माने नेले तो एई लखनऊ जू को माने सिलेक्ट करले नेबा
decide karagala. The nearest zoo was at Lucknow, 200 miles away. Reserving of first class ताकू कोथरे निया जिवो dear student decide karagala ताकू train रे निया जिवो. Okay, so reserving a first class compartment for himself and Timothy. तो एठी हम grandfather decide कले जे मो पाई एवं टाइगर टिमोथी पाई मु गोटे फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट पूरा बुक करिवि माने रिजर्व करिवि माने कोन कीपिंग रिजर्व पूरा संरक्षण कर दबा रिजर्व संरक्षण कर दबा. नो वन वुड शेयर ए कंपार्टमेंट विथ देम तांको सहित केही गलेनी के जीवो एडे बड़ टाइगर टे अछि से कंपार्टमेंट पूरा खाली सेथरे खाली किए थिले ग्रैंडफादर एवं टाइगर टिमोथी. यू कैन एबल टू सी इन द पिक्चर पिक्चर टे देखि दियो सेठी सिर्फ थिले किए टाइगर टिमोथी एवं ग्रैंडफादर. ओके यू कैन एबल टू सी. ओके कंपार्टमेंट माने कोन जो रेल रो डब्बा गुडा को हमें कंपार्टमेंट बोली कहि थाओ. ओके so we will move to the next slide. Grandfather took him to Lucknow where the Jew authorities were only too glad to receive as a gift well-fed and fairly civilized tiger. देखिदेले जेते बेले जो जू रो ऑथोरिटीज माने की कर्मकर्ता माने ओके जूज ऑथोरिटीज माने कोन कर्मकर्ता गुडा जेते बेले देखिदेले लखनऊ रो से जू रे माने खुशी हे गेले. They are too glad to receive as a gift. माने टिमोथी को गोटे गिफ्ट हिसाब रे समाने जेते पाइले बहुत खुशी हे गेले. डियर स्टूडेंट ग्लैड माने कोन ग्लैड माने हैप्पी. फेयरली माने कोन देखिले जे से जो टिमोथी टा पूरा सुंदर हेछि खाद्य पेय को बहुत बढ़िया मिलूची पूरा सुंदर हेछि शरीर टा तार सुंदर हेछि हृष्ट पृष्ट हेछि. ओके तो समान पूरा खुशी हे गेले. रिसीव एज ए गिफ्ट गिफ्ट माने उपहार सदृश्य टाइगर को समान पाई गले जे कि वेल फीड हेइतला. वेल फीड माने कोन ताकू बहुत बढ़िया सुस्त सबल करी खुआ जाइतला बहुत बढ़िया खाद्य खुआ जाइतला सेठी पई से फेयरली सिविलाइज थिला. फेयरली सिविलाइज मींस एम वेरी जेंटल वे बहुत सुंदर भाव रे पोसा जाइतला ताकू. ये स्टूडेंट एठी जू वाले बहुत खुशी किंतु टाइगर तो डिपार्चर होउची. डियर स्टूडेंट माने राइटर्स को ग्रैंडफादर को घरु जू को पळे जाउची. दैट मे बी अ सैड सिचुएशन फॉर आवर राइटर्स बिकॉज़ ही मे मिस दैट पर्टिकुलर क्रिएचर. So this is the part 2 of this particular lesson. We have come to an end. Right now this is the question answer part we are going to discuss. So get ready with your answer. Here I am with the question. So raise your hand. Different school you can participate in this particular process. Very interesting questions are there. First question. Who of Timothy? Ruskin, his grandfather, his father, his grandmother. You can answer. Amulya Vidyapit. From Amulya Vidyapit, you can say the answer. This is a very easy question. Take the mic and answer it. Jerem High School student from Jerem High School, you can also answer. Answer quickly. Who named the tiger cub Timothy? Timothy बोली किए नामकरण करथिले से टाइगर कप को. रस्किन बॉर्न नीजे ना तांको ग्रैंडफादर ना तांको बापा ना तांको जेजेमा हिज ग्रैंडमदर. फर्स्ट स्लाइड राजिकार पढ़ी थी. Ujjalpur, student from Ujjalpur High School. You can answer. Sunday, his grandmother. Yes, the answer is correct. Grandmother. Yours. Very nice. So the answer is correct here. His grandmother named that particular tiger cub as Timothy. At first, Timothy was brought off on. ताकू कौन देखी लालन पालन प्रथमे करा जाउतला माने ग्रोथ तार कौन पाई करा जाउतला माने कोटा दिया जाइतला. मिल्क दिया जाउतला प्रथमे ना रॉ मीट दिया जाउतला प्रथमे ना ब्रेड ना राइस. Very nice. Milk? Excellent. Very good. Very Milk? good. The answer is correct. Yes, correct. Thank you. Have your seat. Next question. Timothy was not fed on milk any longer because परवर्ती समय तक milk दिया गलानी. कौन पाई? He did not enjoy drinking milk. Milk was costly for the grandfather. The milk proved to be too rich for him. Milk was not available any longer. Good answer, Abako. Hemgir High School student from Hemgir High School, you can answer. Option B. Option D. Option D, yeah, option B. Which one you are telling? Read the statement, dear student. Read the statement, please. Milk was costly for the grandfather.
Milk was Milk costly was for the costly for the grandfather. grandfather. No. Try. Another answer it will be. Grandfather ପାଇଁ costly ହେଇ ନଥିଲା. ଏଟା costly ହେଇଥିଲା କାହାର ପାଇଁ? Tiger ପାଇଁ. ମାନେ tiger ହଜମ କରି ପାରି ନଥିଲା. Okay. The milk proved to be too rich for him. ସେଇଟା ହେଇଯିବ answer. Option number C. The milk proved to be too rich for him. This option you need to be select. Okay. Option number C will be the correct answer. Next question ଆମେ ଯିବା. The cob was put on the diet of raw mutton and dax oil. Stark oil, cod liver oil, quill oil, or penguin oil. Student from Biramitrapur Girls High School, you can. Cod liver oil. Very good. Very good. Thank you. Have you seen? Your answer is correct. Cod liver oil. This student taku raw mutton सहित cod liver oil provide करा जायଥିଲା. Okay. Next. Timothy's favorite place in the writer's house was. Writer को घरे तार को particular जगह favorite थिला. The poultry house, Mahmud's room, kitchen, the drawing room. Student from BS High School can say the answer. Student from BS High School, you can answer here. Take the mic and answer it. The drawing room. The drawing room. Very good. The answer is correct. The drawing room. Yes, the answer is correct here. The drawing room. Timothy was given the attractive diet of परवर्ती समय तक को पुणी attractive diet provide करा जायतिला. Attractive diet of Pigeons and rabbits. Oh my God! You have answered very fast. Here the answer is correct. Pigeons and rabbits. Very good. Excellent. Pigeons and rabbit. The answer is option number C. Thank you. Have your seat. Next question. At night, Timothy slept. रात्रि से कोड सोउथिला. In the drawing room, in the gardens, in the gardener's room, in the cook's quarters, in the bedroom. Interesting question one. C. Option C. Option C. C. In the cook's quarter. Correct. The answer is correct here. In the cook's quarter. Who were two companions of Timothy? Timothy रो दीटी साथी किए थिले? माने खेलो साथी. Playmates. Toto and mongrel, fox and rabbit, calf and poppy, deer and poppy. From Sargipali High School, a very easy question here. Who were two companions of Timothy? Timothy रो दीटी साथी किए थिले? माने खेलो साथी. Playmates. Toto and mongrel, fox and rabbit, calf and poppy. Option deer and C. poppy. Option C. No. Option C. No. Try more. Try again. Monkey रो ना कौन थिला? आउ से पॉपी कौन थिला? को प्रजाति रो थिला? Remember. Okay, student from any other school you can try. Harihar High School student from Harihar High School. Option A. Option A. Very good. Option A, Toto and mongrel. Toto. Yes. The answer is correct here. Toto and mongrel. Very nice. Next question. Question number 9. Timothy's companion Toto was the dog, monkey, cat, mongrel. ये कौन थिला? Toto टा किए? Nirmala Girls High School student from Nirmala Girls High School. Right now it is your turn. You can answer. Toto टा किए थिला? सेटा ଗୋଟେ dog थिला, monkey थिला, cat थिला, mongrel थिला. कुह? Monkey. Option Very D. good. Very good. Correct. The answer is correct. Toto was a monkey. Thank you, sir. Okay. Very good. Have you seen? To make itself clean. To make itself clean, Timothy scrubbed his face exactly like a duck. कहा बढ़िया face को rub करता सफाई करते हैं. Correct. Very good. Cat. Option Good A. boy. Sit down. Okay. Good boy. Have you seen? Thank you. Next, Amejiba. Next, out data last data question. Grandfather took Timothy to the zoo to Lucknow by Dex. कहा द्वारा से नहीं की जाती थी. By bus, by tractor, by truck, by train. वर्तमान में देखी थी ले. Odisha High School. You can answer. Take your mic. Take the mic and answer it. Student from Subhash Chandra High School. You can answer also. Train. Very good. The answer is correct. Yes, train. तांकर गोटे पूरा particular compartment book हेतला ना. ये compartment रे केही न थिले. Yes, correct. Grandfather decided to transfer Timothy to a zoo when Dex को समय रे से स्थिर करले आउ याकू रखी होबनी. याकू transfer करिवा zoo को. को समय रे when he was about 6 months old, he began to stalk Mahmud about the house. He grew steadily less friendly. He attacked and killed chickens in the poultry house.
ଏଠି immediate cause ଟା କୋଉଟା କହିବ ତମେ? କାରଣ ତ ସବୁ ହେଇପାରେ ବଟ୍ immediate cause ଟା କ'ଣ? କୋଉ ଘଟଣାଟା ରିସେଣ୍ଟଲି ଘଟିଥିଲା ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ରାଇଟରଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ୟାକୁ ଆଉ ରଖି ହବନି? କୁହ। Option D. Option D. Yes. Try more. Try another time. Immediate cause. Option A. Immediate cause. Immediate cause. Option A. I told immediate cause, dear. You try again. From Gopalpur High School, you can also try. Option C. Option C. Option C. Option C. So one option it is left. So no particular student. I told the answer will be partially. All option will correct. But I told the immediate answer you need to say, immediate reason you need to say, and the answer will be Option B. Option B. No one told right now up to yet. He began to stalk. ଯେତେବେଳେ ସେ ମାହମୁଦକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା, ମାହମୁଦକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ ଫଲୋ କରିଥିଲା ମାନେ ସିକ୍ରେଟଲି, ସେତେବେଳେ ରାଇଟରର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଚିନ୍ତା କଲେ ୟାକୁ ରଖି ହବନି. ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଇମିଡିଏଟ୍ କଜେସ୍. ଅନ୍ୟ ରିଜନ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଡନଲି ଏଇ ଯୋଉ କାରଣଟା ଘଟିଥିଲା, ଘଟଣାଟା ଘଟିଥିଲା, ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଆଉ ୟାକୁ ରଖି ହବନି. ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, we have learned very nicely today the part 2 of this particular lesson. This is the homework for you. Make the particular homework part, note down on your copy, and you must particularly consult to your teachers, concerned teachers in your school. So I hope this class might have helped you and you have understood the concept of part 2 of this particular lesson. So meet you in the next particular class. I will come with the part 3 of this particular lesson. So thank you. Have a nice day.